As you know that we were discussing about the foundation of Indian culture, that is in unit 1 of your second paper, that is History of India. When we are going to talk about the foundation of Indian culture, it can be better bifurcated into two important topics. One is your Harappan culture and another is your Vedic civilization. Out of the two, we had already picked up the Harappan culture, which flourished in the northwestern part of India. And already in the map you see how in the northwestern part of India this culture, it flourished in a very prosperous condition, and the period of this culture, it was from 3300 BC up to 1300 BC. For the better understanding of all of you, we can tell that like a human being, the civilization also passes through different stages. The early phase of the civilization, the middle phase of the civilization, the matured phase of the civilization. And once the civilization reaches the apex point, the topmost point, it is quite natural that again there will be the declining trend. But before going to deal with the declining trend, let me again refresh your memory the different points that we had discussed about this particular culture. The first point of our discussion was the discovery of Harappan culture, and in that regard we discussed that how starting from 1826 from Charles Mason, Alexander Burnes, Alexander Cunningham, the civilization ultimately came to limelight in 1920 with Dayaram Sahani at the excavation of Harappa and with Rakhaldas Banerjee at the excavation of Mohenjo-daro. And it will be definitely the credit goes to Sir John Marshall, who was the Director General of ASI, that means the Archaeological Survey of India from 1902 to 1928. The initiative of this man, it was only due to his sincerity and initiative that the antiquity of Indian civilization, the remoteness of Indian civilization was pushed back to some 1000 years back. And you see, this map can clearly show you how in the northwestern part of India, now this civilization flourished. It includes the border provinces of India now, Maharashtra, Gujarat, Punjab and Rajasthan, present Pakistan, all these areas, they were under the purview of Harappan culture. Also it is known as Indus Valley civilization because it started on the bank of the river Indus and its tributaries, and also we find out the mention of river Saraswati, but unfortunately the river is totally lost. The river is now not in its form, only the reference of the river are found in the Vedas. So, also Saraswati was there, but it does not exist today. We had focused our attention on the geographical extent. All these things, my dear students, I have covered, I have discussed bit by bit. So, no need to give further elaboration. तमको बीट बाय बीट करी मु एगुडिक सब कवर करछि. It is only just to refresh your memory what we had covered in the previous 3 classes. Then the major sites also I gave you, that is Mohenjo-daro, Harappa, Ganwariwala, Kalinbangan, Dholavira, etc., and how it was 20 times bigger than Egyptian civilization, 12 times bigger
Egyptian civilization plus Mesopotamian civilization combined. So, the size of the Indus Valley civilization or Harappan culture was much bigger in comparison to the contemporary civilization. Then our point of discussion was the major Harappan sites, which are the major Harappan sites in India and the major Harappan sites now in Pakistan. The next focus of our discussion was on the town planning and the various structures that have been excavated by the archaeologists. The most fundamental feature we must remember, which I referred several times, that Harappan culture was a urban culture. Due to the urban nature of the culture, naturally they had a proper systematic town planning. They now maintain a very disciplined civic life and different types of structures, both private and public structure. It has been excavated or it has come to limelight by the archaeologists that furnishes us with sufficient information about the town planning, proper town planning of this culture. These are the different pictures which you can find out, and the remains of this picture, what idea you get from all these pictures? The idea you get that this civilization was no longer a very unsystematic civilization, rather their town planning, their construction of houses, the designs, they are the ample proofs to prove that their town planning was very systematic and scientific. These are the picture of public buildings, a great bath, the remains of a granary, the remains of a assembly hall, the town drainage system. So, these pictures what have been dug out from the earth, they are sufficiently very proper to give us an impression of their developed city life. Agriculture and domestication of animals are the other important steps. They give us information about their economy and about the various steps they now followed to have a prosperous economy. Their method of agriculture, the domestication of agriculture, use of different types of animals and different types of pastime, how they followed. The technology and craft of this civilization are no less developed. They are very developed with proper sense in metallurgy, in weaving and in earthenware. The remains of the civilization give us a very high idea about the knowledge of our Harappan ancestors on technology and craft. The pictures of jewelry, the picture of weapons, the picture of household articles, what you are looking at are definitely in a much developed form. They are not underdeveloped form, they are in matured form, and they shows they are how they were expert in all these fields. The Harappan dancing girl, you see that long back they can produce this type of image of a dancing girl, and it is the statue made of bronze. They are weaving earthenware were equally prosperous. Not only the ancestors of this civilization, they were confined to the contact with inland trade or contact with other parts of India, but also inland trade, but also they had their contact with distant lands. So, to improve their economy, the trade and commercial activities were carried on in thorough speed by the Harappans. So, we find out that the excavation of a dockyard at Lothal is a very important proof to show their trade and commercial contact within India and outside India. This is the picture of the dockyard at Lothal, which I had referred earlier. The trade routes, in which route they were carrying on inland trade and in which route they were carrying on overseas trade. These pictures you can gather some information. Then the script.
The picture you see, these are the pictures of Harappan shields, where we find out different types of signs, and this script, what was logo syllabic, means a symbol that stood for a word or a syllable. So, they are script, that means they had their system, a proper system of writing. The weights and measures, the pictures below, you find out that different types of stones, they were used as weights and measures, and on the one side of the last picture on the left side, you will find out the picture of a balance. So, their knowledge in weights and measures were equally praiseworthy. The religious belief, we had already discussed vividly about the salient features of their religious belief, which give us the idea that some of the important characteristics of a present Hinduism, they were to be found out when we discuss the features of Harappan religious belief. So, the worship of mother goddess, male god, animals, plants, then sun, fire, water, all they have got resemblance, all they have got similarity with modern Hinduism. These are the different pictures, and in course of our discussion, we had made thorough reference to the pictures inscribed on these seals. The last part of our discussion was the different types of seals of different shape made from different objects have been found out from the remains of Harappan culture, and these seals are unique in the sense in no other ancient culture we do not find out seals, we find out clay tablets, but not the seals, and these seals to a great extent they are the not only the proof of excellency of the Harappan artist, but also they serve as the valuable source of historic information. So, these are the important points which we had discussed in our previous classes. Now, taking into account the various features of Harappan culture, B. Gordon Child, he has given a remark, and this remark seems to be very significant to the context. So, what is that remark? The Indus civilization, or it is otherwise also known as the Harappan culture, represents a very perfect adjustment of human life to a specific environment. So, Harappan culture represents a very perfect adjustment of what? Of human life to the environment. That means, the people of Harappan culture, they adjusted themselves very properly to a specific environment that can only have resulted from years of patient effort. So, their patience, their effort to develop a civilization to a matured form, definitely it was not the events of 1 year or 2 years, it is a process. So, through this process they learned how to adjust with the environment, and as it has endured, as it continued, it is already specifically Indian and forms the basis of modern Indian culture. You find out the name of the unit is the foundation of Indian culture. So, the modern Indian culture, what we speak or what we realize, what we follow, the origin, the source, the origin, the foundation of this culture can be very well traced back to Indus Valley civilization, and in which areas? In architecture and in industry. Still more in dress and religion, Mohenjo-daro reveals features that have been the characteristics of historical India. So, what we follow today? We find out all these features, all these characteristics had their beginning, especially in architecture, in industry, in dress and religion. Major features have come from the Harappan culture. So, in a way Gordon Child
opines, he makes reference or he is of opinion that the Indus Valley civilization or the Harappan culture, the modern culture of India, owes its origin to Harappan culture or to Indus Valley civilization. These are also some of the pictures of the seals, different seals which have been excavated from various sites or various Harappan sites. The summary, a brief summary is the Harappan culture was situated on the northwestern border of India with an area of 12 lakhs 50,000 square kilometer. So, what was the area of or the extent? The extent over of area over which the Harappan culture flourished. It includes 12 lakhs 50,000 square kilometer with major sites, major important centers with Harappa, Mohenjo-daro, Gumla, Rupar, Lothal, Dholavira, etc., etc. It was an urban culture with proper town planning system, with residential complexes, roads and drainage system. Economic life of the people was much prosperous with activities like agriculture, craft, technology, trade and commerce. People were deeply religious by nature, worshipping various gods and goddesses, plants and animals, and also practiced yoga. Before going to give a finishing touch to the topic, I am being reminded of a very lovely remark of Rabindranath Tagore. The lines run like this: Dekhite giyachi parabata desh, dekhite giyachi sindhu, দেখা হয় নাহি দুচোখ মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু. This is in Bengali what Rabindranath wrote. The ODIA translation of this Bengali form can be presented in this way. ताकु आमे जदि ओडिया रे अनुवाद करिबा आमे निम्न मते कहि परिबा, देखिबाकू गली परबत देश, देखिबाकू गली सिंधु, हेले दुई आखि मेली केबे न देखिली, गोटिए धानर छिंचा उपरे टोपाए शिशिर बिंदु. पिला माने तमे माने मते पचारि पार जे हरप्पा संस्कृति सहित एई कवितार संपर्क कौन. वर्तमान शीत पड़गलानी एवं शीत आसिले समस्त को मन पड़े पिकनिक कथा, बाहर बुलिबा कथा, आमे कोठिकी जीवा. जदिओ कोविड पाई आमे विगत 7-8 मास है पूरापूरी भाव में गृहबद्ध, किंतु तथापि शीत आसिले आमको मन पड़े विभिन्न दर्शनीय जगह कथा. रवींद्रनाथ ये प्रसंग रे कहिले देखा गली पर्वत देश. आम जो भावुँ कुआडे जीवु वर्तमान नेट खोली दौचु कौटी खाली टूरिस्ट स्पॉट. तेणु आम पर्वत पाखु जीवु, हिली एरिया जीवु, कौटी समुद्र पाखापाखि जीवु, बीच को जीवु, देखा गली पर्वत देश, देखा गली सिंधु, हेले दुई आखि मेली केबे न देखिली, गोटाए धानर छिंचा उपरे टोपाए शिशिर बिंदु. मो घर पाखे से जो धान खेतटा अच्छी तार जो पाचिला धान उपरे से जो शिशिर बिंदुटीए पड़ा पड़ी तापर जिते सूर्य किरण पड़ुची सेटा कि सुंदर उज्ज्वल आभा धारण करुची. प्रकृतिर से सौंदर्य आम उपभोग करिवार मानसिकता नहीं. आम दौड़ीचु कौठिकी ना कौठी जीवी, वर्तमान पैसा खर्च करी फरेन जीवी, कौठी सी बीच को जीवी, कौठी मु जीवी वर्तमान सागर तले केमती जाइकी सेठी मु कौन करी, केते रकम चिंता. किंतु मो घर पाखर सौंदर्य आम एंजॉय करने को उपभोग करिवार मानसिकता नहीं. आम कौन कहीं केबे टूर कला बेले पिकनिक गला बेले ऐतिहासिक स्पॉट को जाऊ? नो, नेभर. आमे भाबू सेटा खाली स्टडी टूर रे जानती, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री. आमे स्टडी टूर रे जीवु, किंतु आमे जदि केबे चिंता करंतु जे डिफरेंट हिस्टोरिक साइट्स अंततः भारत भितर जेतिकी हरप्पा संस्कृतिर
पीठस्थली गुड़िक अच्छी धोलावीराटा तो गोटे बहुत बड़ साइट आम केबे देखा चेष्टा करूना आम केबे म्यूजियम भीतर को जाइए हरप्पार सील मोहर विभिन्न प्रकार आसबाबपत्र विभिन्न प्रकार गृहोपकरण सामग्री जो गुड़ा बाहरी आम केबे जाना चेष्टा करूना तेणु से जो रवींद्रनाथ कहले आम निज घर पाखर जो जमी भितर धान जमी पर जो शिशिर बिंदु जमती मुक्ता परी झटकुची से सौंदर्य उपभोग करिवार आमर मानसिकता नाही आमर भितर मध्य जो जो आमर जो ग्लोरियस हेरिटेज अच्छी आम संस्कृतिर जो गौरवमय ऐतिह्य अच्छी जहाँकि दुईटी सभ्यता द्वारा जार मूल दुआ पड़ा गोटे आम कभर कले हरप्पा संस्कृति यार नेक्स्ट आम कभर करूँ वैदिक सभ्यता से सब किंतु जानिबार आमर आग्रह नहीं कि इच्छा नहीं तमें वैदिक सभ्यतार कौन ध्वंसावशेष बाहरी नहीं आमर सोर्स ऑफ इनफॉरमेशन है वेद वेद अच्छी वेदरू जानबू किंतु जार अवशेष आविष्कार होइछि ताकू मध्य जानिबार मानसिकता आमर नहीं तेणु एबे समय आसी पिला माने निजर संस्कृति निजर ऐतिह्य निजर परंपरा ए सब को जानिबा को हेले इतिहास रे आमर निहाती जानिबा दरकार से देशर से जातिर इतिहास आम जातिर इतिहास विशेष कर भारतवर्षर इतिहास जानिबा को हेले जोटा आद्य अध्याय जोठारु भारतीय संस्कृतिर भित्तिभूमि स्थापित होइछि सेही सभ्यता विषय रे आमे निहाती जानिबा एवं सुजोग पाइले जदि भी आमे सुजोग न पाउछु आमे कोन केबे नेट खोली कि देखो आजिकल तो सबु नेट रे अवेलेबल आमे नेट रे खेली पारू आमे नेट रे सिनेमा देखि पारू आमे सबु करि पारू किंतु नेट रे आमे एगुडा खोली कि देखुना तेणु मोर अनुरोध पिला माने जो माने सुजोग पाउछ किछि नाले आजिकल डिस्कवरी चैनल दिया आजिकल टीवी रे केते कोन दउची तेणु तुम चाहिए जो हिस्ट्री उपरे जो विभिन्न अच्छी जदि हरप्पा मु थरे देखुली मो आखिरे थरे पड़ी हरप्पा संस्कृति उपरे भी डिफरेंट साइट्स उपरे देउची तेणु जितेबाला सुजोग पाउछ जदि निजे केबे न देखिछ या माध्यम समस्ते जे सब देखिपारे ता नुह किंतु जानिबा को चेष्टा कले आमे निश्चित भाव में जानीपर तेणु हरप्पा संस्कृति जहाँकि भारतीय संस्कृतिर मूल भित्ति आमे ता माध्यम देकी वर्तमान भारत को जानिबार प्रचेष्टा जारी रखिबा। आउ गोटे कथा जोटा को मु ए क्लास रे करबा को चाहूची मु तम पई केते गुडी मॉडल क्वेश्चंस आई हैव प्रिपेयर्ड एवं मु तुमको कहि देबा को चाहे जेहेतु एटा हमर भारतीय इतिहास रो आद्य यूनिट प्रथम यूनिट तेणु कि प्रकार क्वेश्चन तमे माने ए अध्याय पई प्रिपेयर करिवो। प्रथम देख तमर जेतेबेले +2 रो फाइनल परीक्षा हुए तम मानकर आसे मल्टीपल चॉइस कौन एवं प्रत्येक ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव आंसर्स चारिटा तमर अल्टरनेटिव आंसर दिया जाइथिबो विकल्प दिया जाइथिबो यू हैव टू राइट सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। गोटे जमती मु उदाहरण रे देइछि व्हेन वाज द फर्स्ट हरप्पान सील डिस्कवर्ड प्रथम हरप्पार सील मोहर केबे आविष्कार हेइथिला 1872 मसीहा 73 मसीहा 1874 मसीहा 1875 मसीहा ए जो चारिटा विकल्प भितरु आमे वर्तमान देखिबा को विकल्पटी बा को अल्टरनेटिवटी ठीक अछि तेणु आमे जदि अनलेस एंड अनटिल आमे जदि विषयटा को पूरापूरी भाव में न पढ़िबा आमे निश्चित भाव में उत्तर दबा आम पक्षरे संभव हब नाही। जेतेबेले आमे आविष्कार पढ़ी तमरे मन थिबो मु बारंबार कहिथिली जे 1872 मसीहा रे अलेक्जेंडर कनिंगहाम जी जड़े सिविल इंजीनियर थिले से हरप्पारे किछि खनन करथिले एवं खनन कला बेले गोटी सील मोहर मध्य पाइथिले किछि गृहोपकरण सामग्री पाइथिले किंतु सी किछि बुझी पारिले नाही जे ए सील मोहरटार अर्थ कौन तांकर कोनोसी धारणा हैला नहीं तेणु जदियो से पाइथिले से पूरापूरी चुप रही गले किंतु प्रथम सील मोहर तांको द्वारा 1872 मसीहा आविष्कार हेतला। सो आवर आंसर विल बी 1 that is 1872 AD एवं एथिपाई टिके जदि आमे पूरापूरी भाव में पूराटा पढ़ीदबा आमर धारणा हो तुमको जिते पढ़ाऊली बारंबार कही जे तुम आज जहाँ पढ़ाब आज रात जदि घरे पढ़ीदब सेटा मनरे गुंथी रही जाए सारा वर्ष न पढ़िले भी नहीं पुणी परीक्षा बेले पढ़िले आपे आपे सेटा मन भीतर को चली आसे। बी रे हला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज एसोसिएटेड विथ द एक्सकवेशन ऑफ हरप्पन कल्चर राखाल दास बनर्जी डॉक्टर स्पूनर लियोनार्ड उले none among them
ये जो चारोटी तीनोटी व्यक्तित्व दिखाई बा एमान भितर कहीं नुहंती फोर्थ रे जोटा कहुई या भितर जदि आम एनालाइज करूँ एटा तो तुम मान मोर मुहांमुही देखा होनी नहले मो क्लास रे तुमको आहरी बुझे दे था जहाँ भी देखा या भितर आम देखू या भितर जड़िए लोक हु वाज एसोसिएटेड विथ हरप्पान कल्चर ही वाज राखालदास बनर्जी. Then where is the location of हरप्पा? हरप्पार अवस्थिति केउठी मु साधारण भाव में तुमको कही जे हरप्पार अवस्थिति वर्तमान अवस्थिति है यह पाकिस्तान रे किंतु एथरे केते गुडी जिल्लार ना देछि पाकिस्तान रो कोन लारकाना बेलुचिस्तान मंटगोमेरी आलमगीरपुर ता भितर हरप्पार अवस्थिति है इन द लारकाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब. तमें जमीती पंजाब पढ़ुच पंजाब भारत रे गोटे अच्छी पंजाबटा 10 भाग है बेले 2 भाग हो जाइथिला एवं पंजाब रो पूर्व भागटा रहिला भारत रे पूर्व पंजाब पश्चिम भागटा रहिला पाकिस्तान रे से पश्चिम पाकिस्तान रो सेटा गोटे पाकिस्तान रो प्रदेश तार जो गोटे जिला अछि लारकाना तार भितरे अवस्थिति कहार हरप्पार. Which one of the following place is regarded as a citadel of Harappan culture? जो चारोटी जगार ना तले दिया जाइछि ता मध्यरु गोटिए हरप्पा संस्कृति सहित गोटे बड़ पीठस्थली थिला कराची लाहौर रूपार एंड इस्लामाबाद. कराची नुह लाहौर भी नुह इस्लामाबाद भी नुह द करेक्ट आंसर इज रूपार. तेणु तमे माने जदि निहाती भाव मु बारंबार कहिछि रूपार साइट कराची मु केबे कही नहीं. कराची वर्तमान पाकिस्तान गोटे बड़ इंपोर्टेंट सहर लाहौर भी सहर बट दे आर नॉट एसोसिएटेड विथ हरप्पान कल्चर. इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. Where is Great Bath situated? बृहत् स्नानागार अवस्थिति केउठी? गुमला लोथाल बनवाली मोहिंजोदारो. द आंसर इज फोर्थ दैट इज इन मोहिंजोदारो. तेणु बृहत् स्नानागार आम जोटा कहूँ तार अवस्थिति है मोहिंजोदारो रे. Which metal was unknown to the Harappans? हरप्पान मानकु को धातुर व्यवहार जना नथिला. गोल्ड सिल्वर आयरन एंड कपर. तेणु सुना रूपा तंबा लुहारू से माने लुहार व्यवहार जानी नथिले बट दे वर एक्वेंटेड विथ गोल्ड सिल्वर एंड कपर. नेम ऑफ द गॉड वर्शिप्ड बाय द हरप्पान पीपल. ये जो चारि जन अछंती पशुपति गणेश कार्तिक एंड दुर्गा ये चारि जनक मध्यरु किए जणे केवल हरप्पावासी पूजा करथिले. निश्चित भाव में तुम मैंने कहब पशुपति कारण गोटे हरप्पान शील रु वी फाइंड आउट द पिक्चर ऑफ ए गॉड हैविंग 3 हॉर्न्स सिटिंग इन योगिक पोस्चर होल्डिंग ए ट्राइडेंट सराउंडेड बाय एनिमल्स. पशु मानक द्वारा आवृत हुई त्रिशूल धरी एवं तांकर 3टा सिंह अच्छी तांको बसिकी कहते शिव को कह जाए महायोगी एवं शिव को कह जाए पशुपति. तेणु हरप्पा सील मोहरर से चित्र को समस्ते पशुपति बोली अभिहित करती जहाँकि भविष्य रे हरप्पावासींकर ये पशुपति आराधनारू आमर शिव आराधना आसी बोली अनेक ऐतिहासिक मत दियंती. Which of the following tree was worshipped by the Harappan people? ये जो ट्री भितर को गोटे गछ को से माने पूजा करथिले. मैंगो ट्री आंब गछ नीम ट्री निम्ब गछ कोकोनट ट्री नड़िया गछ जैक फ्रूट ट्री पणस गछ कोटा को पूजा करथिले. एटा हमें गुल्ली मारी भी कही दे परिबो पिला माने काना हमें नीम ट्री को एपर्यंत भी पूजा करू. सहजे आमर दारू देवता अछंती महाप्रभु जगन्नाथ भी अछंती. तेणु एंसरटे भी समान एंसरटा हला नीम ट्री. तेणु तुमर फर्स्ट क्वेश्चन जोटा पड़िबो व्हिच इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तमे माने समस्त जानी रखिबा उचित. ए गोटे गोटे मार्क जो आंसरटा ठीक हबे इट कैरीज 1 मार्क. तेणु तुमर 10टा रु 10टा ठीक हेले यू विल गेट 10 मार्क्स. तेणु इतिहास रे बेसी नंबर रखिबा आदौ कष्ट नुह कारण एते ऑब्जेक्टिव टाइप यही टाइप जो क्वेश्चन पड़ुची आंसर ठीक है माने कहारी साध्य नहीं तुमर नंबर काटिबा को. किंतु गोटे कथा दरकार यू शुड बी थरो
पूरापूरी भाव में न पढ़िले तमे उत्तरटा जानी परिबो नाही। तापरे कौन आसे ना आंसर इन वन वर्ड। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। प्रत्येक क्वेश्चन अच्छी गोटे गोटे मार्क। कौन है व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन हरप्पा एंड मोहेंजोदारो। आमर गोटे शब्द रे उत्तरटी आसीबो। ताले हरप्पा और मोहेंजोदारो भितर आनुमानिक दूरत्व केते तमे जदि न जानी थो गुली मारिबार नहीं अवश्य तुमर माइनस मार्किंग नहीं किंतु जेतेबेले इंटरव्यू देले एमिति भूल भाल लिखिले आमे माने देखु कौन ना भूल भाल लिखिले माइनस मार्किंग हुए तथापि आमे कहीं भूल लिखा आमे पाठ पढ़ी थे जानिबा एटा हला आनुमानिक बा हाराहारी 350 माइल। हरप्पा और मोहेंजोदारो भितर दूरत्व है हाराहारी 350 माइल। व्हाट वाज द बेस ऑफ हरप्पान इकोनॉमी। हरप्पार अर्थनीतिर मूल भित्ति कौन थिला गोटे शब्द कृषि। इट वाज एन एग्रारियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर वाज द बेस ऑफ हरप्पान इकोनॉमी। कृषि थिला हरप्पा अर्थनीतिर मूल भित्ति। व्हाई इज लोथाल फेमस। लोथाल प्रसिद्ध कहीं डकयार्ड। डकयार्ड ओडिया कौन पोताश्रय। तेणु लोथाल थिला कौन ना यह थिला हरप्पा पोताश्रय यह प्रसिद्ध है कौन। तापर आसवा गिव भेरी सर्ट आंसर। एटा हला गोटे शब्द रे आहरी गोटे आसो गिव भेरी सर्ट आंसर। एगुड़ा सबू गोटे गोटे आंसर देले गोटे गोटे मार्क आसी जाउची। हाउ मेनी हरप्पान सेटलमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड बोथ फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। उभय भारत और पाकिस्तान को मिसाई आनुमानिक प्राय केतोटी हरप्पार स्थली आविष्कृत होईची। मु कहछि भेरी सर्ट आंसर गोटे शब्द नहले 2-3टा शब्द भितर हबो। तेणु आम करिपरिबा प्राय आनुमानिक 1400टी स्थली भारत पाकिस्तान को मिसे 1400टी हरप्पा स्थली आविष्कृत होईची। व्हाट वाज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ग्रेट बाथ। स्नानागार दैर्घ्य और प्रस्थ केते। हाराहारी दैर्घ्य प्रस्थ दैर्घ्य है 55 मीटर प्रस्थ है 33 मीटर। What type of craft and technological activities flourished in Harappan culture? हरप्पा संस्कृति रे केउ प्रकार कारीगरी और शिल्प विद्या प्रचलन देखा मिले। 3 प्रकार मु कही मेटालर्जी वीविंग आर्देनवेयर। धातु विद्या बयन शिल्प और मृण्मय बा मृत शिल्प माटी रे से माने जो गुड़ा तैयारी करथिले। 3टा शब्द लिखिले आंसर आसीगला। गिव द टोटल एरिया व्हेयर हरप्पान कल्चर स्प्रेड। हरप्पा संस्कृति विस्तृति लाभ करिथिबा पूरापूरी एरिया आनुमानिक विस्तृति केते। आनुमानिक विस्तृति आमे कहिथिले जेतेबेले समरी व्हेन वी आर डिस्कसिंग 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर। तेणु एगुड़ा जहाँ लिखिले संगे संगे आसीगला गोटे करी मार्क। देन फिल इन द ब्लैंक्स। Harappan culture is situated on dash side of India. Obviously on the northwestern side of India. Harappans did not know the use of dash metal, that is iron. The oldest variety of cotton was found from dash, Mehergarh. Mehergarh is a Harappa settlement which is now situated in Pakistan. से मेहरगढ़ पृथ्वीर सर्व प्राचीन तुला आविष्कार होइछि। डेस इज मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। कौटी आम श्मशान स्थलीर अनुपस्थिति लक्ष्य करूँ दैट इज इन हरप्पा। देन करेक्ट द फॉलोइंग। एगुड़ा सबू 1 मार्क। हरप्पान कल्चर वाज पेस्टोरल बाय नेचर। हरप्पा संस्कृति थिला पेस्टोरल माने पशुपालन। यार प्रकृति थिला पशुपालन ना। हरप्पा संस्कृति थिला सहर कैंद्रिक पशुपालन कैंद्रिक नथिला। सो हरप्पान कल्चर वाज अर्बान बाय नेचर। तमे तळे वैदिक सभ्यता पढ़िबो सेइटारे देखिबो इट इज पेस्टोरल बाय नेचर। छाड़ मोहेंजोदारो इज सिचुएटेड इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ इंडिया। नो, मोहेंजोदारो इज सिचुएटेड इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। Harappan people were using iron plows for agriculture. No, Harappan people were using wooden or copper or
टेराकोटा फ्लाउज जहाँ लिखिबो गोटे लिखिबो आयरन नुह माटीर मु तुमको पिक्चर देखैथिली माटीर लंगल बाहरी तंबार तैयारी लंगल बाहरी काठर बाहरी कि रेफरेन्स पिक्चर देखा जाउछि कना काठटा एते दिन रहिबो नाही माटी भितरे were using for agriculture. The people of Harappan culture were worshipper of Vishnu, no worshipper of पशुपति विष्णु आसी नथिले ए सब गला 1 मार्क क्वेश्चन एवं ए 1 मार्क क्वेश्चन रे पूरा फुल मार्क पाइबा को हेले आम मानकु हमर निजर विषय प्रति पूरा पूरी भाव रे पढिबा को पड़िबो then each question carries 2 marks answer should be limited within 2 or 3 sentences दुई धाड़ी बा अति बेसी रे 3 धाड़ी रे उत्तर हबो when and under whose supervision did the Harappan excavation was undertaken name the archaeologists associated with it कहार supervision रे हरप्पा ए जो खनन आरंभ होइथिला एवं किए या सहित हरप्पा खनन रे किए थिले ना दयाराम साहाणी तेणु दयाराम साहाणी थिले एवं कहार सुपरविजन रे ना सार जॉन मार्शल थिले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रो डायरेक्टर सी थिले द गाइडिंग स्पिरिट एवं या सहित एसोसिएट थिले किए ना दयाराम साहाणी व्हेन डिड हरप्पन कल्चर फ्लोरिश अपॉन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर डिड इट ग्रो तार समय हैला 3300 ख्रीष्टपूर्व 3300 रु ख्रीष्टपूर्व 1300 पर्यंत हरप्पा संस्कृति तुमर विस्तार लाभ करथिला अपॉन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर सिंधु नदी इंडस रिवर गिव द टोटल नंबर ऑफ हरप्पन साइट्स हाउ मेनी अमंग देम आर सिचुएटेड इन इंडिया एंड पाकिस्तान मु कहिथिली 1400 प्राय साइट प्राय 900 अछि इंडिया रे आउ 900 रु अधिक 950 पाखापाखि बाकी 450 पाकिस्तान रे राइट अबाउट द हरप्पन एक्सटेंशन ऑफ हरप्पन कल्चर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट आमे गुडा डिस्कशन करथिले तबले ज्योग्राफिकल ये रे जेटा थिला नॉर्थ रु साउथ नॉर्थ रु हैला तमर अखनूर इन जम्मू काश्मीर अप टू दाइमाबाद इन महाराष्ट्र ईस्ट टू वेस्ट रहला आलमगीरपुर इन मिरट रु तमर हैला सुतका जेंडर तुम पढ़िबो जते पढ़िबो जानि परिबो पॉइंट आउट द नेम्स ऑफ 2 हरप्पन साइट्स बोथ फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया रे आमे करि परिबा गोटे धोलाभिरा गोटे कालीबंगन पाकिस्तान रे हरप्पा एंड मोहनजोदारो डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ हाउसेस फाउंड फ्रॉम हरप्पन रुइन्स हरप्पन ध्वंसावशेष केमिति विभिन्न प्रकार घर सबू बाहरी सेठू बाहरी साधारण लोकंकर रहिबा पई छोट छोट घर एवं शस्यागार टाइप रो गोटे सार्वजनीन सौध एवं राजा महाराजा बा अभिजात वर्गंक पई बड़ बड़ घर गिव ए नोट ऑन फूड हैबिट्स तांकर को खाद्य खाउथिले वर्तमान नॉर्थ वेस्ट रे भी जहा हुए रागी बाजरा गहम बार्ली एगुड़ा से माने खाउथिले व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसेस दे यूज्ड टू वेयर ए ड्रेस फॉर द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दे कवर्ड आल्सो ठंडा जगह से गुड़ा कहीं नॉर्थ वेस्ट रे ठंडा अच्छी दे आल्सो कवर्ड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एगुड़ा रे तांकर हम केमती जानूचु ना विभिन्न पिक्चर ऑन द सील्स जो नारी और पुरुषंकर मूर्ति होईची से मानकर ड्रेस रु जहाँ सब खोदित होईची वी गेट एन आइडिया तेणु आमे सब गुड़ा को एखने आलोचना करिबा समय सापेक्ष मेंशन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बिग बिल्डिंग गिव द ओपिनियंस ऑफ द हिस्टोरियंस एज टू द पर्पस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन जो बड़ बड़ सौध गुड़िक आविष्कार होईची ऐतिहासिक माने कौन कहती कहीं बड़ सौध गुड़िक होईची ना ऐतिहासिक माने कहती जे जनसाधारणकर स्वार्थ पई जनसाधारण जमते व्यवहार करि परिबे से प्रकार साधारण सौध त माने साधारण सौध कहले बुझी परिबो धर लाइब्रेरी गोटे कॉलेज गोटे डाक्तरखाना एठी जो बिल्डिंग गुड़ा दोज आर ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स एठा कहारी निजस्व व्यक्तिगत संपत्ति नुह यह सर्वसाधारण व्यवहार निमंते उद्दिष्ट तेणु ए प्रकार बिल्डिंग गुड़ा को कहा जाए कौन
ना पब्लिक बिल्डिंग्स। तेणु हरप्पा संस्कृति रे जो शस्यागार सेठी काहारी जनकर शस्य से माने गच्छित न रखु नथिले। बहु समस्त राज्यर जेतकी शस्य उत्पादन हला ताकू भविष्यत पई सेठी गच्छित करी रखा जाउथिला। तेणु ताहा थिला सार्वजनीन शस्यागार। तेणु ए प्रकार बहुत बड़ बड़ बिल्डिंग आमे हरप्पा संस्कृति रे देखिबा को पाऊ। व्हाट वाज द बेस ऑफ हरप्पान इकोनॉमी? That is agriculture. What are the other means of their economic growth? आउ कौ कौ उपाय रे सेमानकर आर्थिक समृद्धि आसुथिला? आमे लिखि परिबा कारीगरी, तांकर कारीगरी और धातु कारीगरी और शिल्प, तापर आसिला व्यवसाय और वाणिज्य। तेणु एगुड़ा थिला अन्यान्य उपाय जहा द्वारा सेमानकर आर्थिक अभिवृद्धि आसुथिला। इन व्हिच क्राफ्ट डिड हरप्पान एक्वायर ब्रिलियंस? Metallurgy, earthenware and your weaving. Mention the articles of import and export by the Harappan people. से माने कौन आमदानी करथले, कौन रप्तानी करुथिले। मु जेतेबेले तुमको इनलैंड ट्रेड विषय रे आमे डिस्कशन करुथिले जे विभिन्न प्रकार रत्न पत्थर सेमति के माने भारतर अंचल रु आनुथिले एवं से माने बहिर्वाणिज्य रे दस्ता आनुथिले एवं एठारु तयारी विभिन्न प्रकार अलंकार और गृहोपकरण सामग्री मध्य से माने सेठिकी जाउथिले। तापरे राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 ट्रीज एंड 2 एनिमल्स ऑफ वर्शिप बाय द हरप्पान पीपल। दीटा गछ और दीटा एनिमल काहाकू से माने पूजा करथिले। से जो पिक्चर अच्छी तांकर शील रे आमे विभिन्न प्रकार एनिमल मानकर उपस्थिति करू एवं विभिन्न प्रकार ट्री करू। तेणु से मानकू करथिले ता भितरु दुईटा ना लिखिबो। व्हिच सिविलाइजेशन डिड कम इनटू एक्जिस्टेंस आफ्टर हरप्पान कल्चर? या परे कौन सिविलाइजेशन आसिला ना सेटा हमें पढ़िबा। दैट इज द वैदिक सिविलाइजेशन। एंड हु वेर द मेकर्स ऑफ द सिविलाइजेशन? द आर्यंस वेर द मेकर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। The next answer you will get, each question carries 3 marks. Each answer should be limited within 6 sentences. तेणु बेसी मार्क पाइब 3 मार्क पाइब 6 धाड़ी लिखिब। 3 मार्क तो पूरा दिया जीवनी, अति भल लिखिले 2.5 पर्यंत तुम मानकु दिया जीव। थ्रो लाइट ऑन हरप्पान एक्सकावेशन। हरप्पार खनन उपरे आलोकपात कर। तमे लिखिब केमिति सर जॉन मार्शल थिले डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं तांकरी नेतृत्व रे वर्तमान हरप्पा और मोहेंजोदारो रे खनन कार्य आरंभ है। यही खनन कार्य आरंभ होगा द्वारा भारत संस्कृतिर प्राचीनत्व आहुरी 3-4 हजार वर्ष पछकू फेरीगला एवं भारत वर्तमान जे गोटे प्राचीन ऐतिह्यर प्रवहमान धारा एठी अच्छी ताहा मध्य एथरु जना पड़िथिला। जियोग्राफिकल एक्सटेंट आमे देखिछे। गिव एन अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द हरप्पान्स। केमिति हरप्पारे जो विभिन्न प्रकार अधिवासी थिले तांको उपरे एटा तमर न आसी पारे। नरेट द टाउन प्लानिंग ऑफ द हरप्पान पीपल। केमिति विज्ञान सम्मत उपाय रे से माने तांकर नगर उन्नयन योजना करथिले। तापरे नगर निर्माण प्रणाली एगुडा को तम माने लिखिबो। प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम पय प्रणाली सेटा मध्य केमिति थिला। डिटेल्स ऑफ ग्रेट बाथ। तेणु ग्रेट बाथ जोटा थिला बृहत स्नानागार तमे मध्य केमिति सेई स्नानागार को आसीबा पई तमर अत्यंत स्वास्थ्यसम्मत उपाय रे केमिति जल आसुथिला एवं दूषित जल निष्कासित होउथिला एवं एई जो स्नानागारटी केमिति सर्वसाधारण को उद्देश्य रे उद्दिष्ट थिला ताहा उपरे आलोकपात करिवो। 6 धाड़ी ताठू बेसी नुह। विविडली डिस्क्राइब द रोड एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हरप्पान्स। तापरे मध्य हमें कही हाउ द रोड्स वेर वाइड एंड स्ट्रेट। ईच रोड कट इच अदर इन 90 डिग्री एंगल। बंका तढ़ा सरू आमे जो सब चलीचु संकीर्ण रास्ता सेमिति नथिला। सेमानकर उन्नत नगर यापनर प्रणाली तांको प्ररोचित करिथिला। प्रशस्त रास्ता सीधा सीधा गोटे रास्ता आ गोटे रास्ता को छेद करिवो 90 डिग्री रे। आम पुणी बंका तढ़ा खाल ढीप एसबू रास्ता नहीं। आमे सहर रे रहू सत किंतु शहरी मनोवृत्ति आमर सेमिति नहीं जहाँ सेमानक पाखरे लक्ष्य करा जाए। गिव द डिटेल्स ऑफ ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द हरप्पान्स। इनलैंड ट्रेड, आउट ट्रेड, डिस्टेंट ट्रेड, ट्रेड विथ डिस्टेंट लैंड्स, अंतर्वाणिज्य बहिर्वाणिज्य। मुझे जो कथाटा कही हाउ दे रियलाइज्ड दैट वाणिज्य बसते लक्ष्मी।
जे लक्ष्मी लाभ बा धन संपत्ति केमिति व्यवसाय वाणिज्य आसे से मु तुमको रास्ता भी देखई समुद्र दे केमिति दूरदेश को जाउथिले एवं लैंड रूट रे भी मध्य जाउथिले भारत एवं जो जो अंचल को मध्य एशियार विभिन्न अंचल को थ्रो लाइट ऑन द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द हरप्पान पीपल हरप्पा लोकंकर धर्मीय विश्वास पर आलोकपात कर पुरुष शक्य मेल गॉड पुरुष देवता को उपासना मदर गॉडेस वर्शिप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स वर्शिप ऑफ फायर वाटर sun god the practice of yoga so all these things which forms the salient feature of Hinduism today originated during the time of Harappan culture and they were in a very important form in a very strong form present in the Harappan religious belief. Write a note on mother god worship. The most important thing was the mother god worship. The worship of mother goddess. Why? The mother or the female energy is the source of creation. तेणु सृष्टिटा ए जगतर सृष्टि निहित अच्छी नारी शक्ति मध्यरे तेणु नारी है सृष्टिर आधार यह भित्ति करी से माने नारी शक्ति उपासना यह गोटे थिला तांकर धर्मीय विश्वासर अन्यतम वैशिष्ट्य तापर आसीबो ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स राइट्स नोट्स ऑन द फॉलोइंग आमे नोट लिखिबा संक्षिप्त टिप्पणी आमे जोटा कहूछु से 5 धाड़ी भितर तापर बेसी लिखिबार नहीं पीरियड ऑफ हरप्पान कल्चर मु तुमको गोटे आनुमानिक पीरियड देइथिली जे 3300 ख्रीष्टपूर्व 3300 रु ख्रीष्टपूर्व 1300 समय काल भितर विकसित होइथिला हरप्पा सभ्यता जार 3टी पर्याय आद्य पर्याय मध्य पर्याय और सबुठु मैच्योर्ड प्राप्तवयस्क पर्याय बा सबुठु आमे जोटा कहू मैच्योर्ड एज ऑफ हरप्पान कल्चर तेणु 3टी पर्यायर विकसित है यह सबुठु अभिवृद्धि घटी शेष पर्यायर जितेबाला जमीती मनीषटीए तमे माने बा मु आमे समस्त मनीष अच्छु किंतु गोटे पिला जितेबाला किछि घे पिलाटा कौन जानिछि तापर तमे माने पिला अवस्था किशोर है टोकाटा तापर टोका हेल है टोकाटा कौन जानिछि मनीष बुद्धि केतेबेले पाकल हुए आमे जो कह पाकलिया कथा कहूची ता माने प्राप्त वयस्क तेणु गोटे मैच्योरिटी मनुष्य जीवन में जमी बयस हेले मैच्योरिटी आसे बहुदिन अभिवृद्धि सहित आमर हरप्पा संस्कृतिर अभिवृद्धि आसी से माने बहुत मैच्योर्ड हो जाइथिले मनीष पुणी एवं सेटा थिला सबुठु तांकर बेस्ट फेज तेणु सेगुड़ा को तमे मैंने लिखिब हाउसिंग सिस्टम ऑफ द हरप्पान हमें डिस्कशन करथिले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स विभिन्न पशु को गृहपालित करी पशु शक्ति को मनुष्य उपयोगी करबा पई से माने केमती करथिले तापर लिखिबो ग्रेनेरी शस्यागार हरप्पान आर्ट एंड क्राफ्ट आमे डिस्कशन करिछे डॉक यार्ड एट लोथाल रो पोताश्रय डिस्पोजल ऑफ द डेड बाय द हरप्पान पीपल हरप्पान पीपल माने केमिति शव सत्कार करुथिले 3 प्रकार उपाय रे करुथिले शवपिंड को पोती दउथिले शवपिंड को दाह करुथिले आउ केते अंचल रे शवपिंड को नहीं गोटे खोला जगह रे जंगल बा दूर खोला जगह रे रखुथिले विश्वास थिला जे पशु पक्षी से माने खाइबे जोटा वर्तमान सुद्धा भी आमे पारसी भितर देखू जो माने जोरोस्ट्रियन धर्मावलंबी तो माने को आमे को पारसी से माने वर्तमान सुद्धा मध्य जे एक्सपोजिंग द डेड बॉडी टू भल्चर से माने गोटे उच्च जगार निर्जन रे डेड बॉडी रखी दे आसीबे एवं भल्चर सेटा को खाई खाई नष्ट करिवो मु ए विषय रे मध्य आगुरु तुमको कहिची तापर आसिला अनदर इंपोर्टेंट एस्पेक्ट हरप्पा सील्स एंड स्क्रिप्ट्स हरप्पार सील मोहर और हरप्पार लिपि मु तुमको कही जे गोटे दुखर विषय जे हरप्पा लिपिर एपर्यंत पाठोद्धार हेई नाही विभिन्न पाठोद्धार हेई नाही कहले भूल हबो मु गोटे प्रकार पाठोद्धार करिछि सी ऐतिहासिक आउ जो गोटे उपाय रे पाठोद्धार करचंती अन्य जने अन्य उपाय रे ता माने गोटे विषय को विभिन्न ऐतिहासिक विभिन्न भाव रे पढिचंती तांको भितरे समता न रहु थिबारु सेई पाठोद्धार ए पर्यंत ग्रहणीय होई नाही
आउ जदि समस्ते एक भाव पढ़ते ताले से विषय उपरे गोटे जदि निर्दिष्ट मंतव्य आसंता ताहले आमे सेटा पढ़ते जेहेतु ऐतिहासिक माने विभिन्न भाव में मत दौरान ए पर्यंत से गुड़िक ग्रहण करा जाय नै। मु एई परिप्रेक्षी तुमको पुणी थरे कहबाकू चाहे तुम खारवेलଙ୍କ ना शुणिथिबो ओडिशार पिला माने खारवेलଙ୍କୁ तो निहाती शुणिथिबो जे माने आम ओडिया परिचितर जे अग्रगण्य व्यक्तित्व जे कलिंग सम्राट खारवेल तांको विषय में कोठू जानुचु तांको विषय रे हमर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है खंडगिरी जो उदयगिरी जोठी अच्छी भुवनेश्वर रे से उदयगिरी रे गोटी अच्छी गुंफा जोटा अच्छी हाथी गुंफा से 17टी धाड़ी अच्छी से 17टी धाड़ी रु ही आम खारवेल विषय रे जानुचु एवं जहाँ लेखा है सब ऐतिहासिक समान भाव में पढ़ुंट तेणु कौन समस्या नहीं आमे सेटा जानिले तमें भी पढ़िबो खारवेल विषय रे सेटा पढ़िले आमे जानिगले किंतु एथिरे जो हरप्पा मोहर रे जो लेखा गुड़िक रही स्क्रिप्ट रे जो गुड़ा अच्छी विभिन्न भाव में मत आसुथिबारु सेटा ग्रहणीय हेउ नाही। तेणु वर्तमान आमे कौन कले ना 1 नंबर क्वेश्चन रे जो विभिन्न टाइप रे देली शून्य स्थान पूरण कर भूल थिले ठीक कर गोटे शब्द रे उत्तर दियो बा 2-3टी शब्द रे खूब संक्षिप्त उत्तर दिया आ जो विभिन्न प्रकार अल्टरनेटिव देली मु तुमको डिस्कशन करदेली। वर्तमान आम देखा खाली लॉन्ग क्वेश्चन तो ना देखी पार्थ ईच क्वेश्चन कैरीज 7.5 मार्क 7.5 मार्क एटा लॉन्ग क्वेश्चन राइट विविडली ऑन एगुड़ा को आम कौन एसे टाइप क्वेश्चन विविडली ऑन हरप्पान कल्चर हरप्पा संस्कृति उपरे लेख ब्रीफली डिस्क्राइब द जोग्राफिकल एक्सटेंट किछि भाग पड़िला जोग्राफिकल एक्सटेंट प्रोसेस ऑफ टाउन प्लानिंग एंड द स्ट्रक्चर्स एतकी खाली लिखिबो नहले आउ गोटे पड़िला फोकस लाइट ऑन एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटी या उपरे लिखि परिबो गिव एन अकाउंट ऑफ द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द हरप्पान पीपल केवल धर्मीय विश्वास उपर लिखिबो तार जो विभिन्न वैशिष्ट्य अच्छी बा पूरापूरी भाव में सबू को लेकिन पड़ा मेक एन एस्टिमेट ऑफ हरप्पान कल्चर तेणु सब विषय गुड़िक जहाँ जहाँ आम डिस्कसन कलु से गुड़ी को तमें खूब संक्षिप्त रे लिखो कारण एते लिखा संभवपर हुए नहीं तेणु गोटे विषय तुम एति प्रकार क्वेश्चन पाइपर सब विषय जो पढ़ो सब विषय यही टाइप्र क्वेश्चन आसो एवं एथरू गोटे दुईटा होगी मिसी तुमर हो पिला माने आमे ए विषय बहुत आलोचना कले एवं मोर आशा और विश्वास तुम मानक टॉपिक टी भल लगी तमें माने भलरे ग्रहण करिथिबो एवं निश्चित भाव में आमे जेमिति आलोचना कले से अनुसार पढ़िले तुमर एटा मने रहिबो। थैंक यू मे गॉड ब्लेस यू।